हम सबको पता है सिद्धू मूसेवाला और करण औजला की बीफ थी और ये कोई छोटी मोटी बीफ नहीं थी। इस बीफ को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ बताया जाता था और सिद्धू पाजी की डिमाइस के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ये बीफ जो है ये खत्म हो गई थी, क्योंकि सिद्धू पाजी के साइड से और इवन करण औजला के साइड से ये जो बीफ थी ये कभी भी पर्सनल लेवल पे नहीं गई थी या फिर कभी भी म्यूजिक के आगे नहीं बढ़ी थी और इन दोनों आर्टिस्ट ने इस बीफ को सिर्फ म्यूजिक तक ही लिमिट करके रखा था। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज नोटिस किया है कि सिद्धू पाजी के डिमाइस के बाद हमें करण औजला कभी भी सिद्धू पाजी के बारे में बात करते हुए नजर नहीं आए हैं, कोई भी इंटरव्यूज में या फिर अगर हम बात कर ले उनके इंस्टाग्राम लाइव या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे वो ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखे हैं। बट कल ही हमें फिल्म कंपेनियन के यूट्यूब चैनल में करण औजला की एक इंटरव्यू देखने को मिली, जहां पे करण औजला पाजी के डिमाइस के बाद, सिद्धू पाजी के डिमाइस के बाद पहली बार खुल के सिद्धू मूसेवाला पाजी के बारे में बात करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात किया, जिस टॉपिक पे शायद तुम लोगों ने करण औजला को कभी भी इसके पहले बात करते हुए नहीं सुना होगा। और इस इंटरव्यू में हमें एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मैच्योर्ड करण औजला देखने को मिले। After 29th of May, I talked to Sidhu's dad. I called him, and he gave me blessings. He told me to take care of yourself, and I just wanted to. And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone, and we cleared stuff up. It gave me a little bit of relief. No one knows this other than his family, but I would just like to address it. Like, we talked and okay, so इस वीडियो में हम करण औजला की इस डिफरेंट साइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमें इस इंटरव्यू में देखने को मिला। हम जब भी करण औजला के गाने सुनते हैं, करण औजला को म्यूजिक वीडियो में देखते हैं, हमें एक टफ करण औजला देखने को मिलते हैं, एक गैंगस्टर पर्सोना हमें देखने को मिलता है। पर इस इंटरव्यू में करण औजला ने ये बताया कि करण औजला बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो पर्सोना वो अपने रियल लाइफ में कैरी नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में हम इस इंटरव्यू के बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, करण औजला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इवन करण औजला ने जो सिद्धू पाजी के बारे में बात किया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। ये तो चाहता है खुदा के हम खास्ते ही जिए, अब क्या करे खुदा मिले रास्ते ही नहीं है। शिफ्टों की ब्रेक पे लिखता मैं गाने और उनमें से एक ये गाना सुनिए। लिखे तो गाने कहीं पर किताब में बना के डाले ना, बिजी हूँ काम पे। ख्वाब है मेरे पर लगती है लाशें, सांसें मेरी अब चलती कहाँ पे। हाँ भाई बड़ा जुनून निकाल। गाने का नाम है द गन, आर्टिस्ट है दी पार्ट टाइम रैपर। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही फायर ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है। सो अगर तुम ड्रिल गाने सुनते हो, अगर तुम लोग को ड्रिल ट्रैक पसंद है भाई, डेफिनेटली ये गाना तुम लोगों के लिए है। बहुत ही बढ़िया काम है। सनम रे का वही सैंपल जो आई थिंक हॉलीवुड मतलब बाहर के रैपर्स ने भी उन्हें ड्रिल में यूज कर रखा है, वही सेम सैंपल हमें सुनने को मिलता है। ओवरऑल बैंगर ट्रैक है और अगर तुम भाई ड्रिल सुनते हो तो तुम्हारी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली ये ट्रैक जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तो रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई लोग को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया ट्रैक एक बार जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू चेक इट आउट। करण औजला जिन्होंने बहुत छोटे से उम्र में, जब वो 14-15 साल के थे अप्रॉक्स, तभी उन्होंने गाने लिखना स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्टिंग में वो सिर्फ गाने लिखा करते थे और वो जो गाने थे वो किसी सिंगर को या फिर रैपर को दे दिया करते थे। मोस्टली वो गाने गाया नहीं करते थे या फिर रैपिंग नहीं किया करते थे। फिर बाद में उन्होंने करना स्टार्ट किया और यही सब चीजों के बारे में, उनके करियर के स्टार्टिंग के बारे में, कैसे वो म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए, कैसे उन्होंने गाना लिखना स्टार्ट किया और कैसे गाना लिखते लिखते ग्रेजुअली वो खुद सिंगर बन गया, ये सारी चीजें हमें इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में करण औजला के साइड से सुनने को मिलती है। Karan, such an incredible journey. You started writing when you were 13 or 14 years old. Do you remember where the love for writing and the love for music began? मैं ना जब पंजाब में था, most of the people know, but for the people that don't know, I come from a village named Karana. So मेरा जन्म पंजाब में ही हुआ था and वहीं पे पला, and then when I was maybe 9 years old, you know, a lot of stuff happened in my life. I lost my parents, and then उसके बाद जब कोई नहीं था बात करने के लिए, so that's when I just started putting it down on the paper, because मेरे को ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वो सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, like what is he saying? But it was just like, and to be honest, it was just the mahal around me and
वो सब चीजें मिलाकर just so मेरा just वहीं पे ध्यान गया कि pen and paper and that's it, you just gotta put it down and you know basically explain your feelings. But पहले तो एक तो गाने मैंने sad लिखे और मैंने सोचा कि okay सही है लिख लेता हूँ. But then I thought of it, I'm like, what if I, you know, sell these songs to somebody, make some money and, you know, so I would message a lot of producers from my area, like I was a kid. सो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जहां पे वायलेंस और गन कल्चर के बारे में बहुत पहले से बात किया जा रहा है. इवन करण औजला के गाने में हमें ये सारी लिरिक्स सुनने को मिलती है. तो जब इससे रिलेटेड सवाल करण औजला से पूछा गया तो करण औजला ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया जो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और यहाँ पे हमें करण औजला की एक बहुत ही डिफरेंट साइड देखने को मिलती है और हमें ये पता चलता है कि रैपर्स या फिर सिंगर्स जो गाने में अपने आप को जैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं रियल लाइफ में सिनारियो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और वो शायद वैसे नहीं होते हैं. Punjabi music, there's been such a long history of violence, right? From Amar Singh Chamkila to Sidhu Moosewala, right? And you've yourself been the target of gang warfare and gang violence. So do you think that artists like yourself have a responsibility to try and stem it, because you have a large voice, because there are, like you said, thousands of people around the world listening to you? I try to judge all this. Like I've been in the situation for 4.5, 5 years where I've been trying to, you know, extort and, you know, my house getting shot at. And most of the people don't know my house probably got shot at 5 times. Like it's in the Canadian, like I did reports everywhere, but I don't talk about it too much because I don't want to look back at it. But whatever happened, I feel like, yeah, it's my mistakes too, because I, you know, tried to maybe portray myself like that, like I'm one of the tough ones, but maybe I was, because everybody, but at the other page, I look at it like everybody else is doing it too, so why just me? And then whatever Sidhu went through, his family went through, I can't even explain you how that made me feel, because I was like, okay, getting your house shot at, you're still alive, but now this has crossed everything. Like this is becoming a deal, so you gotta, you know, basically think about what you do. If I be honest with you, I don't even feel like coming to India, but it's my motherland. I want to see my house, because nobody knows what's happening behind the scenes. There's so much stuff, and sometimes you want to talk about issues. Sometimes why didn't I talk about this in any other interview? Like this happened to me, that happened to me, never went live, because there's so many people and so much stuff happening behind the scenes that your voice will get shut down. You'll ask for more problems basically if you speak about it. So I don't want to, you know, lose anybody in my life anymore and don't want to put myself in that situation. So I just try to stay away from all that stuff, because it's such a hard times when all that stuff is happening to you and for no reason, just because you're singing and somebody wants you to do a show there and the other person don't want you to do a show there. So where do you go? Like it's such a hard situation, and it had a big impact on our shows and stuff too, because sometimes like in India, I could have been in India this time doing my shows on all these events, all that stuff. Why am I sitting at home? Because I don't want to be in that situation, and honestly I don't know who to ask for help. I'll be honest with you, because हमारे पंजाब में ना वो जो है ना कि हर एक बंदे में है, हमारी कौम है वो कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਘੈਂਟਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ. So it's like me even being a Punjabi, a Jat, I just wanted to put it down. इवन करण औजला ने एपी ढिल्लों के एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए या उसके सपोर्ट में ये बताया कि कैसे पंजाबी आर्टिस्ट को रेगुलर थ्रेट्स और प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं. AP Dillon after Sidhu's assassination said that you have to deal, and I'm reading it exactly, being a Punjabi artist, you have to deal with constant judgment, hateful comments, threats and negative energy. Would you agree? Is that how it is? 150% I agree. There is constantly something happening
in every artist's life, especially the ones that are top tiers, like there's constantly something happening in their lives. People don't know about it. Like even me being an artist, it hurts us sometimes when we read stuff about ourselves. And even after whatever happened to me, 2 years ago, like my house, all that stuff, and people are just making fun of it. Like, yeah, this was meant to happen. Like, are you serious? You know, the bullet just didn't hit us. That was the only thing we got lucky about. But it went through our houses, you know, and there was kids at houses. सो करण औजला और सिद्धू मूसेवाला पाजी की जो बीफ की स्टोरी है वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से चली आ रही है। इवन मैंने भी इन दोनों की जो बीफ है वो प्रॉपर्ली हिंदी में एक्सप्लेन कर रखी है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अगर जानने के लिए कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शॉट्स ले रखे हैं, तो वो वीडियो मैं सजेस्ट कर दूंगा, लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। पर इन सब चीज़ों के ऊपर करण औजला ने बहुत ही मेच्योरली रिस्पॉन्स किया, ये बताया कि पहली जो चीज़ें हुई है और जो दोनों साइड से हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें पहले तो इन्होंने कर रखा है, पर अगर हम अब देखें, करेंटली देखें, तो ये कुछ सेंस ही नहीं बनाती है। और इवन करण औजला ने ये बताया कि इनकी सिद्धू पाजी से कॉल पे बात हुई थी और इन दोनों ने अपने बीफ को खत्म कर लिया था। But I have to ask you this because I read that you and Sidhu were sort of these rivals, right? And you had this cold war between the two of you, and in a lot of your music you were pulling each other down. Looking back, is there anything you wish you hadn't said? Are there any regrets? All that happening to Sidhu and his family just changed my perspective of looking at life and doing everything. Like all these beefs, all that stuff, it doesn't make sense. It doesn't mean anything. But honestly, nobody knows, but I would like to tell you in this interview, and I feel like people need to know. After 29th of May, I talked to Sidhu's dad. I called him and he gave me blessings. He told me take care of yourself, and I just wanted to apologize that I couldn't be there, and I just wanted to, you know, just talk to him. I honestly called him, told him I don't know what to say to you, but honestly, I'm your second son. If you ever need anything from my side, please know I'm here. That's all I could say. And honestly, if they ever need me, I'll be there. I'm not just saying it. And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone and we cleared stuff up. It gave me a little bit of relief. No one knows this other than his family, but I would just like to address it. Like, we talked and he just said, like, it was just the people in middle making, you know, all these things worse. But after, when I talked to him and after all that stuff happened, like, it was all good in between us. And then all that stuff happened and I just couldn't even, I didn't know what I was going to say, but just, you know, tell him I'm here. ओके, तो दिस वाज द इंटरव्यू। और मैंने इस इंटरव्यू के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं ये वीडियो देख रहा था मैंने एक चीज रियलाइज किया कि करण औजला की एज सिर्फ 26 साल है, मतलब लिटरली वो मेरे से भी छोटे हैं। और इस एज में इतनी ज्यादा मैच्योर बातें करना, इतने अच्छे से इंटरव्यू में क्वेश्चन को टैकल करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि सवाल पूछा जा रहा है उनसे और वो मतलब पहले से प्रिपेयर्ड है उस सवाल के लिए, और इतने अच्छे से वो आंसर कर रहे हैं और इतने अच्छे से सिचुएशन को उन्होंने या फिर सवाल को उन्होंने काउंटर किया, आंसर किया। भाई दिस वाज अ डब्ल्यू इंटरव्यू, लिटरली लाइक पूरा इंटरव्यू अगर तुम लोगों ने नहीं चेक किया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर चेक करना। बाकी मैं ये भी देखता हूँ कि सिद्धू पाजी के जो फैंस हैं वो अभी भी करण औजला को थोड़ा हेट देते हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब सिद्धू पाजी अलाइव थे तो कंपटीशन चल रहा था सिद्धू पाजी और करण औजला के बीच कि कौन टॉप आर्टिस्ट है, कौन बेस्ट आर्टिस्ट है। बट अब हमारे पास सिर्फ करण औजला है, ठीक है। एंड अब हम लोग पंजाब के मतलब कोई भी आर्टिस्ट को खोना नहीं चाहते या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री कोई भी आर्टिस्ट को खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो हमारे पास अब जो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट बचे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करो। और करण औजला इज रियली टैलेंटेड, मतलब करण औजला अभी फटना स्टार्ट हुए और मुझे लगता है करण औजला हमें इतनी क्रेजी ट्रैक दे सकते हैं फ्यूचर में कि भाई वो मतलब एवरग्रीन ट्रैक होगा, मतलब वो याद किया जाएगा कि हाँ ऐसा ट्रैक बना था। करण औजला ने पास्ट में भी ऐसे ट्रैक दे रखे और फ्यूचर में भी कुछ ऐसे ट्रैक आएंगे तो सालों तक मतलब
जनरेशन, एक दूसरे जनरेशन तक प्ले किए जाएंगे. सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लव टू करण औजला एंड थैंक्स फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू और ये सब बातें करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए. सो यस, दिस वाज इट. दिस वाज द वीडियो. चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो. सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर में अगर कोई रिक्वेस्ट है ट्विटर पे फॉलो कर लो, कोई रिक्वेस्ट है या फिर कुछ है तो वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ. रेडिट में अपनी मीम सबमिट कर सकते हो, ठीक है. सो this was it. This was the video. Thanks for watching it. Thanks again. Thanks a lot.